वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि 18 अप्रैल को अमेरिका में टैक्स जो भी टैक्स कलेक्शन का टाइम है वो ख़त्म होता है। तो टैक्स कलेक्शन का टाइम जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद बेसिकली क्या होगा बिटकॉइन के साथ। पॉसिबली मुझे लगता है कि 18 अप्रैल से बिटकॉइन के हालात व वाक़यात शॉर्ट की पोजीशन की तरफ जाएंगे। एंड ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, हर एक के लिए नहीं बोल रहा। तो शुरू में मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली मैं क्या देखता हूँ। मुझे कोई फील ऐसी नहीं आती कि बिटकॉइन का कोई 19 अप्रैल के बाद कोई 31,700 को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब अगले कोई 6-7 दिन तक, और नीचे जाना चाहिए। अगर ये 31,700 तक गया तो इसको वापस आना चाहिए नीचे। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास ट्विटर पे, जी मैं बहुत एक्टिव होता हूँ ट्विटर पे, मैं बहुत सारी प्रेडिक्शन दे रहा होता हूँ, बहुत सारी बात कर रहा होता हूँ। Then again, you should not follow any YouTuber, you should not follow any influencer who is coming on YouTube and trying to educate you. We are not your financial advisors, and you are not that innocent enough. So stop being greedy, do your own research, stop being that innocent person that, oh my god, that YouTuber was telling me about this coin, that YouTuber was telling me about that exchange, so I started trading on that exchange. We are not sharing profits, so we will not be sharing any kind of losses. So please, please, please just take this as entertainment show, like you watch Ripley's Believe It or Not, like you watch Guinness Book of World Record. If you see someone doing some kind of stunt, you don't copy that, right? You're sensible enough not to copy that. So watching anyone doing live trading, and if you are trying to copy that person, you are actually trying to copy someone who is doing a crazy stunt. So leverage trading is a crazy stunt. I don't recommend anyone to copy any of my trades. If anything goes wrong, you will be responsible. And I'm using Bitgate. The referral code is in my description. Obviously, I'm getting paid for it. So I'm openly telling everyone that, listen, it's a paid job. And I personally suggest you that you do your own research. So in order to buy Bitcoin, you can have exactly go to my YouTube channel. And yeah, that's all paid, because nothing is free in this world. If something is free, that means you are the product. Oh my god, so much lecture, so much lecture, so much lecture. So I will be taking all my trades on Bitgate. So the point is that I'm just waiting if these retweets and likes, ये लाइक और वीडियो के लाइक और रीट्वीट तेज़ी से आगे बढ़ेंगे तो हम आज की बात करना शुरू करेंगे। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। एंड लेट्स सी इफ आई कैन गेट समथिंग। टू 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 Pakistan time, standard time is here. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज 17 अप्रैल 2023 है और आज जो मामला चल रहे हैं क्रिप्टो पे, उस पर बात करेंगे। क्रिप्टो के ऊपर बात करने के लिए हम लोगों ने आज जहमत दी है वकार ज़का साहब को, जो आज इस पर बात करेंगे। और उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस वक्त मैं जिस चीज़ को देख रहा हूँ वो है जी कि मुझे 17 अप्रैल के बाद, न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से 17 अप्रैल 2023 के बाद मैं अपने लिए बिटकॉइन की शॉर्ट की पोजीशंस को देखूंगा, बीएनबी की शॉर्ट की पोजीशंस को देखूंगा, इथीरियम की शॉर्ट की पोजीशंस को देखूंगा 18 अप्रैल ऑनवर्ड्स। न्यूयॉर्क टाइम 18 अप्रैल 2023 से ऑनवर्ड्स मैं शॉर्ट की पोजीशंस की तरफ ज़्यादा तवज्जो दूंगा 26 अप्रैल 2023 तक। और ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ, ठीक है। So in my opinion, after 18th April 2023, I will be planning short positions on Bitcoin, Ethereum, BNB, and not Litecoin, because halving is coming for Litecoin. So yeah, I will not be going for that. But after 18th April 2023, I will be focusing on short positions rather than going long. Long, uh, for Bitcoin, the resistance level that I feel is 31,750. So after 31,750, if Bitcoin stays above 31,750 for like 6 or 7 days, then I will assume that the bottom is in. Right now, my personal
my personal experience is that the bottom of Bitcoin is not in, and the Bitcoin bottom will be in if we stay above 31,750 or 60 for about 6 or 7 days. There will be corrections coming. There will be big corrections, but after that, if the correction is coming, then certainly those will be like big bounces too. But before that, I don't see that the bottom is in. I might be completely wrong, and this entire run from 15,700 till now is an amazing Bitcoin run. And this is because of the banks collapsing, BlackRock getting in, and also the tax collection time is getting over. So let me see if I can get something here. On Bitgate, I'm going to focus right now on RNDR coin, and I'm going to focus on Blur, and I'm going to focus on Core, and I will be watching Hook, and obviously BTC. So I'm just testing. Right now I'm just testing Bitgate for some short positions, and let's see if I can pull out some trades. RNDR, Blur, Core, Hook, and Bitcoin. So what exactly you people think? On Bitgate, what kind of trade I will be opening? Considering RNDR, Blur, Core, Hook, and Bitcoin. And my personal recommendation is that please never ever follow a crypto YouTuber blindly. No YouTuber will take responsibility if you lose money on an exchange, if you lose money because he was talking about some coin and you picked it up. Please do not try to act innocent, that you were so innocent that you started following some YouTuber blindly and never did your own research. If you earned your money through legal means, and if it is not drugs money, if it is not corruption money, then obviously you're going to do your homework before taking any trade, before investing in any coin, before putting your money on an exchange. So please don't try to act innocent. You are not innocent. Basically, you are extremely greedy. So, Mr. Greedy and Miss Greedy, please do not blame any YouTuber for your own problems. So, yeah, just enjoy the show like you enjoy Ripley's Believe It or Not, like you enjoy Guinness Book of World Record. And please do not say that, oh, I was copying you. It is, we are not sharing your profit. So, we will not be sharing your losses. So, just enjoy the show like you enjoy someone doing crazy stunts on TikTok, like you enjoy someone doing crazy stunts on Ripley's Believe It or Not or Guinness Book of World Record. You don't copy those trades. So leverage trading is basically someone pulling off a wheelie on a bike. So let's see if I can take shots over here. And in like 1 minute, I should be opening more shots. Let's see if I can do this. So let's test Bitgate for a while and let's see if we can see. Please do not take these trades. I humbly request you, please do not take these trades. Um, hmm, R&D Blur core 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 short taken, R&D short taken. See if we can just pull this off. Let's make it like this. तो कहाँ से देख रहे हैं आप इस वक्त? कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है, क्या देख रहा है इस वक्त? सो हम शुरू करते हैं ब्लर से. ब्लर के ऊपर देखें क्या होता है. तो बेसिकली मैं तो प्लान करूंगा शॉर्ट की पोजीशंस 18 अप्रैल के बाद. आप मत करना मुझे कॉपी प्लीज़, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी.
बर कॉइन को भी हमने शॉर्ट किया है। 7 और भी कॉइन शॉर्ट किए हैं, इसको नहीं किया, बाकियों को भी किया हुआ है।